पहले कि कोविड हुआ था उस टाइम पर भी ऑफलाइन सेल्स, ऑफलाइन मार्केटिंग ये सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था उस टाइम? 2025, I'm sitting on a 600% growth for the brand. Yeah, so brand has grown by that, and touch wood, I'm extremely lucky. तो मैं आपका पर्सनल फेवरेट मार्केटिंग कैंपेन कौन सा रहा? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स। और आज मेरे साथ है हेड ऑफ मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स ऑफ जोवीज, मिसेस राखी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है मैम। Hi Sonali, how are you? कैसी हैं आप? Absolutely good. सबसे पहले ये बताइए, आपका करियर स्पैन इतना डाइवर्स है कि मैं आपका लिंक्डइन देख रही थी तो मुझे याद ही नहीं हुआ वो। मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आपकी जर्नी में आपसे पूछना चाहूंगी। Oh, okay. So I know my journey looks a little haywire, and but it has been really good. Started my career with banking, one of the best organizations in the world to work with, American Express. Learned a lot. I mean, what I think that the kind of core values organizations like Amex give to you are phenomenal, unmatchable. So I was very lucky to start my career with a brand like American Express. So from American Express, I learned a lot, did pretty well by the grace of God, and then again, of course, because you are in banking, and that was in way back in 2006. I moved to another bank for a short stint. From there, I moved to another bank, but somehow I was realizing that I'm done with it. I mean, for a while I thought that I might be jittery now, then I'm making some quick decisions. But the more I was going to my office every day and spending those hours, although see, I was learning at every step, but I thought I could do something more, because when I was interacting with my customers, I was telling them about the brand. I felt that I can be a good storyteller, अच्छा। and the way they were giving me the feedback about our banking products, I was taking those feedbacks really seriously. I was one of those people. I was going back to my organization, telling my seniors that I think we should make certain changes or certain tweaks in the product, so that the customers are liking it more, and appreciating us more. Right. That was the whole idea about it, and I realized that I can do more, and then I started looking for some opportunities in marketing and communication. Took me a while and a huge amount of salary cut, but then I took a leap of faith, and I moved to Reliance Communications, which was 92.7 FM that point of time. Great break. Again, new industry, learned a lot, met some fantastic people. Not a big stint over there. Then I moved to Percept. Percept was one of the largest media houses at that very point of time, and so Sonali, what has happened is, in my whole journey, I've been really lucky to have great mentors and great bosses. I have always had amazing bosses, so I met one of my greatest mentors in Percept, and she told me that how the things work, and I think as a person also, I have always been very keen, extremely keen in learning new things, and if I can learn this also, if I can, you might call me greedy, but I think that greediness was worked for you. Worked for me, exactly, yeah. So yes, it worked for me, and from Percept, I mean, obviously it was a media agency, and a lot of work. No day, no night. I was just working continuously, and I was enjoying it also. I got an opportunity with Investors Clinic, one of the leading real estate organizations of that point of time. I was offered a role of head of marketing over there. Too early in my career, but then I was like, let's do it. I mean, what the heck? I mean, कितने साल पहले की बात है मैम?
It was in 2011. 2011. 2011. So 2011, I joined them as a head of marketing. Hmm. Learned everything. I mean, see, so in 2011, the marketing scenario was absolutely different from what it is right now. Right. There was no digital, you know, it was Ah. all print, lot of radio, and lot of events, and print, radio, outdoor events. Started doing TV that. might be. TV might be, yes, obviously not might be, yeah, definitely. TV was one of the biggest part of the advertising, but yes. So learned that again, great learning. Again, I had a great boss over there, and it was a process. You know, every day I was learning, I was failing, I was again learning. Did some award, we did some award-winning campaigns over there, and I had spent good 8 years with Investors Clinic. I became a mother while working over there, and the also one extremely important thing I think which I have missed here is the organizations I have worked for. They have been extremely supportive. I had nothing to crib about it. Right. You know, they understood that okay, so I have certain responsibilities back at home here also. Right. They supported me a lot, and I'm extremely thankful to God for that. And post that, I joined another real estate organization. After spending 8 years in Investors Clinic, initial 5 years were great, you know, because you were learning a lot. But marketing is something which changes itself, I think, in every 2 years, every 2.5 years. So I was evolving, the industry was also evolving, the marketing trends were also evolving, and somehow I was getting in the hunch that I think I'm done with real estate now. Not that there was nothing left to learn, but as an individual, as a marketer, I wanted to do more. Now, there was no specific definition of more that time, Right. but something more. So anyway, so I was looking for something more at that very point of time, and I got a chance to work with Jovi's Herbal that time. Jovi's Herbal is a skincare brand, 20-year-old skincare brand, doing phenomenally well in the herbal beauty care industry, and I joined them. Again, a leap of faith. I think my life has been full of lot of leap of faiths, but yeah, then I joined Jovi's Herbal, and beauty industry, absolutely new for me. But I think the basics of marketing remain the same Right. throughout. So I joined there. It's been a good 6 years I've been with them, and the journey has been fantastic. Yeah. मैम आपने बैंकिंग से मीडिया एजेंसीज से रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट से स्किन केयर, Skincare, yes. मतलब ये 4 अलग अलग कैटेगरीज हो गई जिसमें लोग काम करते हैं. ये सफ़र जो आपने तय किया इतना लंबा, ये पूछूंगी मैं आपसे कि एक वुमेन के तौर पर स्पेशली अलग अलग इंडस्ट्री को फेस करना वो कितना इजी था या मुश्किल था? क्योंकि आप जब नई इंडस्ट्री में जाते हो तो एक तरह से आपके लिए वो पूरा एक न्यू सर्कल होता है, वो आप कैसे बताएंगी? I guess, Sonali, not for a women only. I think हर किसी के लिए difficult होता है, because आप किसी certain industry में काम कर रहे होते हैं, then you make contacts over there. Right. ठीक है? Then you move to another industry. You start with scratch. When I'm saying start with scratch, starting from scratch, I absolutely mean it right now, Right. because you need to have contacts. You need to know people here, the vendors, understand the consumer behavior also. Obviously, it was difficult, but not impossible. But not impossible. Again, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग के जो रूल्स, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं. ठीक है? Just like in real estate, it's more about B2B and B2C and larger duration of campaigns. But in beauty industry, there are short formats of campaign. The industry is always evolving. Sometimes there's K-beauty, sometimes there's L, sometimes there are short forms video, long form videos. But again, I think it depends on person to person, that how greedy you are. How greedy you are to learn. And somehow, I mean, that's what I said, कि greediness helped. जैसे मैम हर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी रहते ही रहते हैं, उनको एनालाइज करना और उनसे कुछ ना कुछ सीखते भी हैं. बिल्कुल, absolutely. I mean,
as a brand manager or as a marketer, that's is I think the most important 3 things में से तो ये आता है keeping a close eye on what your competitors are doing. क्योंकि I mean है तो ये रेस ही ना, at the end of the day है तो ये रेस ही, ठीक है. सो आप रेस में आपको देखना तो पड़ेगा ना कि आपके अगल बगल वाला क्या कर रहा है. करेक्ट. तो बिल्कुल यस, एंड यू मोस्टली लर्न. One thumb rule of life is never ever stop learning. You never know from whom you are learning. Always keep your eyes and ear open. करेक्ट. मैम जब आपने मीडिया एजेंसीज में काम किया, कौन सी ऐसी स्किल थी जो आपको बाद में भी काम कर आई हमेशा के लिए, बीइंग अ मार्केटर? Understanding the customer. I'll tell you how. अच्छा. You're a client for me. I'm coming to you for a media brief. ठीक है. Now client is saying I want certain thing in certain city, in certain campaign. Now आपको पता है कि एक न्यूज़पेपर, I'm talking about 2011, I'm talking about those times, कि मुझे पता है कि इस जगह पे ए न्यूज़पेपर जो होता है इसका सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा है और इसकी लीडरशिप ज़्यादा अच्छी है, और मे बी सम रेडियो चैनल और मे बी सम टीवी चैनल, ठीक है. सो अ क्लाइंट इज कमिंग टू यू बिकॉज उसकी सम स्पेसिफिक नीड्स है और उसको लगता है कि आप उसके एक्सपर्ट हो. सो एज एन एक्सपर्ट I need to deliver my best. So I need to be, thorough with my work. That ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे ये न्यूज़पेपर काम कर रहा है. So अपनी चीज़ के बारे में to have your basics clear and understanding what a client want. Now client अब वो change होकर के employer बन जाता है. Now जैसे आज की डेट में if my seniors or my employer ask me that in South I want a different kind of campaign for my sunscreen. So as a marketer, I should be knowing that in down south, this YouTube channel will work, or maybe this print will not. This magazine or this specific newspaper will not work. So keeping yourself well versed from with all the necessary information which can give you the best results is something जो कि हमेशा starting से लेके end तक it has worked for me. आप कैसे मैम, जैसे आपने बोला कि साउथ में ये कैंपेन चाहिए, तो किस तरह से आप उसके लिए पूरा रिसर्च करती हैं, कैसे पता रहता है? I read a lot. I read 3 to 4 newspapers every day. अच्छा. I do a lot of researches. There's a lot of data which is available online. Then I talk to people. I talk to people. I talk to the sales representative from my Tamil Nadu team. I'll speak to someone who is in Ahmedabad, or my contacts, what is working over there. So if sitting in north, आज मैंने डिसाइड किया कि अभी सनस्क्रीन का सीजन नहीं है, बट सनस्क्रीन का सीजन तो नॉर्थ में नहीं है ना, बस साउथ में तो गर्मी शुरू हो गई है ना, वहाँ पे तो लोग सनस्क्रीन लगा रहे हैं. ऑल्दो सनस्क्रीन इज समथिंग व्हिच यू शुड यूज अक्रॉस द ईयर, मतलब 12 महीने लगानी चाहिए सनस्क्रीन. बट लोगों को ये पता ही नहीं, लोगों को पता नहीं है. सो आई मीन ऑब्वियसली यू आर एजुकेटिंग पीपल, बट वन सिंपल लाइन में आंसर ये है कि आई रीड अ लॉट, आई कीप माई सेल्फ updated with all the trends and whatever is happening. जैसे मैम आपने बोला सनस्क्रीन लगानी चाहिए 12 महीने, क्यों लगानी चाहिए? सनस्क्रीन लगानी चाहिए because there are UVA and UV rays. You need to protect your skin from that. And 12 महीने में ऐसा तो कुछ होता नहीं कि सन की पोजिशनिंग यहाँ से यहाँ हो गई, UV रेज जो है वो कम हार्मफुल हो गए. They are as harmful. ठंड है, अभी तो धूप है ही नहीं. That's what in your head. That's not happening, So we need to educate people. Most of the time, trust me, there are 70% people who think like that only. Right. But again, as a brand custodian or as a brand owner, I need to tell people that no, this is not the right thing. Right. जैसे मैम आप बता रहे थे कि 2011 में मार्केट पूरी तरह से डिफरेंट था. हाँ, That was totally mostly print, TV, radio kind of. आज की और तब में कितना फर्क है? 360 degree. There was no digital that time. At that point of time, the digital was only website, making a website which people are hardly visiting, and generating leads to sell the real estate properties or the real estate projects you're working with. That was most of the marketing campaigns were limited to that. Coming back to 2025. I don't know how many people are getting the physical newspaper copies at their home. I mean, I know I do because I read, but I know a lot of people who don't. They prefer to read it over the mobile phone. Yeah. I mean, so this is a generational shift which I have seen, right? So from print, from everything which is my, if I have a 100 CR budget, 80 CR was going to the print medium only. Now, if I have a 100 CR budget,
I don't know whether I'll be spending even 10 CR on print or not. So there is a 360-degree transformation, and for that 360-degree transformation, again, you know, I had to keep myself updated with everything. I did a lot of short-term courses also, you know, Achha. so because you can't stop learning, you know. Yeah. I have to stay in the industry and I have to be a successful marketer, I need to understand the nuances of the particular industry. So if I have a team, if I have somebody who is managing my digital campaign, and if I don't know that what is the outcome I want from my digital campaigns, I will never be able to run a successful team or a successful campaign. Right. So to understand that, I will never shy away from asking my junior most digital guy that what is CPM or what is CPC. Right. You know, so and I'm doing this for myself only. ये मैं अपने लिए कर रही हूँ कि हाँ मुझे सीखना है, because Right. I want to deliver the best for the organization. मैम आपने 2 टर्म्स बोले, CPM एंड CPC, होता क्या है वैसे? Because I also don't know. CPC is cost per click. अच्छा. So whenever you're clicking on an ad or something, the particular cost which you have to pay for that, that's CPC. And CPM is cost per million. I mean per 1,000 impressions. मतलब अच्छा. 1,000 लोग अगर आपके ad को सिर्फ देख भी रहे हैं स्वयं, so उसकी कितनी कॉस्टिंग है. ओके. जैसे मैम डिजिटल मार्केटिंग के भी कई मीडियम्स हैं, वैसे मार्केटिंग भी बहुत अलग अलग तरह से की जाती है. मतलब मैंने सुना जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, क्या क्या डिफरेंस है? कुछ आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए. अलग अलग तरह की मार्केटिंग जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में है. See, influencer marketing तो बहुत टाइम से अच्छा कर रही है. Influencers are the new models these days, and they are doing really well for the brand. They have worked wonders for the brand. I also work with a lot of influencers, and I mean the kind of results we see with a few of them are phenomenal. So influencer marketing, I mean that's that, and experiential marketing is somewhere आपने किसी बीच पे या फिर आपने किसी मार्केट में अपना एक सनस्क्रीन का बूथ लगा दिया. अच्छा. ठीक है. There are huge cutouts of your sunscreen tube or something, but you can go and just press it and get the sunscreen, you know. So अच्छा. it's all about, you know, touch and feel. You want to see the texture of that cream. You want to see how will it look like how will it feel on my skin. So that's called experiential. Now experiential is different for different industry. So maybe in electronics you have to go and see how this TV will look like, but this is something people are doing this, and marketing, trust me, is evolving every day. I mean there's a lot to learn, and it's very interesting. अच्छा मैम, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं मार्केटिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, मतलब बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं, कस्टमर का फीडबैक हो गया, 10 चीज़ें हो गई, बट मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट रखती है ये मुझे आप बताइए. अगर किसी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं होता या ब्रांडिंग नहीं की जाती है, तो क्या वो इतना सक्सेसफुल हो सकता है बिना उसके भी? नहीं. सो मेरा ये मानना है सोनाली दैट मतलब आई एम नॉट टेकिंग अवे द importance of customer service or finance or any particular team in any organization, but marketing is something wherein marketing is what it's bridging gap between the product and the end consumer. How will a customer or a person will get to know about your brand? That's the role what marketing plays. What is the role of a brand manager? Brand manager is the voice of the end consumer. So brand manager is somebody who is going to the sales team or going to the product team कि अगर आप इसमें इस सनस्क्रीन में 60% का SPF नहीं दोगे तो जो लोग बीच पे जा रहे हैं क्या would they like it, because that's what people want. Or maybe if I'm promoting any ad in Odisha, और चलिए उड़ीसा में लोगों को फिर भी हिंदी आती है, बट इफ आई गो टू कर्नाटका और केरला, कैन आई रन अ हिंदी एड ओवर देयर एंड पीपल विल अंडरस्टैंड इट? नो. सो marketing is something, marketing is just not about making a content and just releasing it everywhere. Right. Marketing is also about understanding the customer. See, we are all here to sell. Even in marketing, what you're doing is selling. But marketing is somewhere is a gap, is a place wherein
आप लोगों को बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा है और हाउ कैन इट बी यूजफुल फॉर यू, how will the sales happen? Sales will happen eventually, but not in the volume you are looking at. मैम ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग दोनों इम्पोर्टेंट होती हैं या? Absolutely. So, see, offline marketing is something, TV तो आप दिखाओगे ना, TV is something which we've been doing, we've been watching. अभी TV change हो गया, अभी we have come to the OTT channels. But again, साधारण भाषा में तो वो टीवी है ना हमारे लिए. साधारण भाषा में आप उसको आज के ज़माने में CTV बोल दो. CTV is connected TV, ठीक है. बट है तो एट द एंड ऑफ द टीवी ना. सो ऑफलाइन तो आप दिखा रहे हो ना. ऑनलाइन so you can't live without online, because everyone has a phone these days, and if you can't control that screen in the customer's hand, you can't do that. So I think both of them are playing a parallel role, but as a marketer, what I feel is online marketing is obviously a few steps further ahead from offline marketing. अच्छा मैम, जब पैंडमिक की कोविड हुआ था उस टाइम पर भी ऑफलाइन सेल्स, ऑफलाइन मार्केटिंग ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था उस टाइम पे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था, तो मैं आपको बताती हूँ. सो व्हेन आई जॉइन जोवीज, मैंने जोवीज एज ए मार्केटिंग, आई जॉइंड एज अ मार्केटिंग टीम, इन अ मार्केटिंग टीम. सो बट देन दिस pandemic happened, and we were selling mostly offline only, not much online, because that's what there was a brand call. But then pandemic happened and nothing was selling offline, and most of our sales were coming from offline mediums. Then we took a call. हमने कॉल लिया कि चलिए ठीक है, अब हम ऑनलाइन ही, we will start our online sales as well. We'll start our online channels as well. अच्छा. So my bosses, they offered me a role that आप करोगे e-commerce. Can you manage e-commerce for us? I didn't know anything about e-commerce. I mean, And you said not even about e-commerce. But again, I had to learn also, and somehow, I was like, why not? What maximum could happen? This, I won't be able to do this, but saying no this time won't help me. So I said yes to it. Started building it again from the scratch. We were doing minimal business online that time, but then I started building it with a small team, and again a great boss, again a great mentor over there, and they helped me, and we started the online operations in 2020 is when pandemic happened. right. And in 2025 I'm sitting on a 600% growth for the brand. Yeah, so brand has grown by that, and touch wood, I'm extremely lucky to be a part of this journey. But yeah, जैसे मैम आपने बोला बहुत अच्छे बॉस आपको मिले हैं, मेंटर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में, या आप अपने जूनियर्स को किस तरह से हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं? मैं कभी छुट्टी के लिए मना नहीं करती हूँ. अच्छा. आई लाइक दिस बॉस. आई नेवर से नो फॉर हॉलीडेज. आई मीन, मुझे लगता है कि छुट्टी इज समथिंग विच rejuvenates our employer or anyone. And if somebody is coming to me and asking for a chutti and or a holiday or a leave, and even if I know that sometimes that they're lying also for this, I would say yes, because आप अभी आपने ना बोल दिया, right. तो फिर उसका दिमाग तो उसी छुट्टी में. So let that person go. वो दिन आकर भी काम तो उतना नहीं करेगा. Exactly. So छुट्टी is something which everyone deserves. ठीक है. So I always give them leaves. That's like, okay, ठीक है, जाओ छुट्टी करके आओ. And mentors are very important. I mean, mentors, mentors ऐसा नहीं है कि वो आपका रोज हाथ पकड़ के आपको सिखा रहा है कि नहीं आज तुम ये करो, आज तुम नहीं करो. मेंटर ना आपको लाइफ में ना कुछ चीजें बता रहा है, कुछ आपके लाइफ गोल्स हैं कि ऐसा करो. मे बी इफ यू आर मूविंग लाइक दिस और थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है, सो द मेंटर इज समबडी हु विल टेल यू कि ऐसा मत करो, ऐसा भी किया जा सकता है जो कि तुम्हारे लिए बेटर होगा. Or maybe that mentor, that very specific mentor has done something specific in their lives, right. which you have really liked. You got inspired by that. But I would not say mentors. I got really good bosses. So I don't have a mentor. I don't have a mentor right now. Right. मैम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी जैसे आपने काम किया, वो ट्रांजैक्शनल इंडस्ट्री है वो. Absolutely. बट
इमोशनल कनेक्ट बना के अपने कस्टमर्स से रखना, ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर जगह से इमोशनल ब्रांडिंग कैसे आप मेंटेन करके रखते कस्टमर्स के साथ? इमोशनल ब्रांडिंग क्या है सोनाली? इमोशनल ब्रांडिंग ये है कि आप कस्टमर से बोलोगे कि somebody जिसने अपना आज तक अपना घर नहीं लिया, सो यू विल क्रिएट अ ड्रीम सिनेरियो फॉर देम कि ठीक है, बाय योर फर्स्ट होम, ठीक है, you'll show a picture, happy family sitting somewhere, you know, you're visualizing a dream for them. आपने उनका एक ड्रीम जो है उनके लिए विजुअलाइज करके दे दिया कि आप आइए अपना घर लीजिए, और दिस इज द इमोशनल कनेक्ट ओनली, ठीक है। somebody जो कि अपना घर पहली बार ले रहा है, उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, फिर आप उसको बहुत सारी फैसिलिटीज भी दिखाओ कि आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद आपका जब एक घर रेडी होगा तो यू विल हैव दिस पार्क, योर किड्स विल हैव दिस पर्टिकुलर प्लेस टू स्टे, आप अपना आराम से रह रहे हो, इट्स अ नाइस एयरी हाउस एंड ऑल। एवरीबडी वांट्स दैट, हर किसी को पता होता है। सी एवरीथिंग इज देयर इन योर हेड, इन योर सबकॉन्शियस हेड। एज ए मार्केटर यू जस्ट हैव टू put that into reality, that this is how your dream will look like. And once the connection between, see in beauty also, आप क्या बता रहे हो कि आप ये पर्टिकुलर लिपस्टिक यूज करोगे तो आपके लिप्स बहुत प्लम्प लगेंगे, या फिर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टिंट देन योर फेस विल लुक बेटर। सो यू आर जस्ट सेलिंग ड्रीम्स, कुछ नहीं हो रहा, यू आर जस्ट सेलिंग ड्रीम्स, एंड ड्रीम्स, आई थिंक ड्रीम्स हैव अ ग्रेट कनेक्ट विद द इमोशंस। तो मैं आपका पर्सनल फेवरेट मार्केटिंग कैंपेन कौन सा रहा है अभी तक? मेरा पर्सनल मार्केटिंग कैंपेन, so I did one marketing campaign when I was at Investors Clinic, that was Flat 983. अच्छा, I'll tell you the reason why also. We won a lot of awards also for that, one of the best campaigns in the radio industry. So we did a campaign, Flat 983 was happening every year. हर साल हम फ्लैट 983 कर रहे थे। वाई 983? बिकॉज रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी इज 98.3, एंड एक साल हमने उसमें क्या किया था कि हम उस कैंपेन को हम रेडियो पे करते थे ऑब्वियसली, एंड देयर वर इवेंट्स आल्सो। अब उसमें क्या होता था, कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते थे, वोटिंग होती थी, हर साल का एक थीम होता था। अच्छा, फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर द थीम वाज द पीपल हु आर वर्किंग फॉर सोशल कॉजेस। So the winner was Gitanjali Babbar. So Gitanjali Babbar used to teach kids at this red light area called GB Road. अच्छा, So I met her, and we interviewed her a lot of times, and she used to tell her stories. And not only Gitanjali, I met a lot of people. You know, I met a lot of people who are working selflessly for people. I mean, आप समझ रहे हो कि there is no motive required. right. आजकल की दुनिया में for anything and everything there is some motive, and working tirelessly, relentlessly, selflessly for something when you're not gaining or earning anything, Correct. is something, I mean, I'm a big fan of, right. You know, so that was a campaign which was extremely close to my heart also. I have done a lot of campaigns. I mean, with Jovi's every campaign is close to my heart, because मेरे लिए हर कैंपेन इज लाइक माई बेबी। सो मैं तो बहुत सारे बच्चे हो गए उनके हिसाब से तो मेरे, बट येस, दैट वाज माय फेवरेट कैंपेन, बिकॉज यू नो इट वाज क्लोज टू माय हार्ट। वुमेन्स का मैम होना एक मार्केटिंग में कुछ अलग होता है, उनका कुछ अलग रोल होता है? नहीं होता, इट्स सेम, इट्स आई मीन बीइंग अ वुमन इज चैलेंजिंग समटाइम्स, sometimes I mean, I wouldn't say that any kind of demarcation. कुछ टाइम होते हैं लोग जो who prefer talking to men, or right. they think that females are not good with their analytical skills, and I don't know, मतलब मुझे कभी ऐसा realize नहीं हुआ। Again, good great bosses, वो these bosses always enabled me to go extra mile, you know, take your own decisions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉस आप पे इतना रिलाई करे कि दे लेट यू मेक योर ओन डिसीजंस, लेट यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, दैट्स समथिंग। टॉकिंग अबाउट मैम वुमेन, आप एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं, साथ साथ आप 10 साल के ट्विंस की प्राउड मदर भी हैं। हाँ, अभी 11 साल के हो जाएंगे। अच्छा, मेंटेन करना वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ कितना इजी एज अ वुमेन है? बिल्कुल इजी नहीं है, it's extremely difficult. This guilt never goes.
वर्किंग मदर गिल्ट्स नेवर गोज, इट जस्ट लाइक पहले ज़्यादा होती है, फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती है. बट see, difficult क्या है, you have to create a support system for yourself, you have to create a ecosystem for yourself, you have to ask for help. सोनाली, आप यहाँ पे stubborn नहीं हो सकते कि I will not go to my mother-in-law, I'll not go to my mother. In my case, I've been extremely lucky to have a support system from my parents' side, from my in-law side. They've always been there from day one. कि तुम काम करो, you go to work, and I will look up. I will. I mean, then as a working mother, not as a working mother, I can't be too nooky. You know, I can't. I have not. I'm not those kind of mothers जहाँ पे बहुत ज़्यादा micro parenting या फिर helicopter. मैं कर भी नहीं सकती. It's not my basic nature only. I'm not like this with my team also. I mean, I treat them like as my kids also. So मैं उनको भी नहीं हर time बोल रही हूँ. So this is something. And as a woman who wants to work also and raise kids also, you need to learn how to compartmentalize. You know. आप समझिए, आप रिलाई करिए लोगों पे, आप डेलीगेट करिए, आस्क फॉर हेल्प, नेवर शाय अवे फ्रॉम. कभी मैम ऐसा हुआ कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद बच्चों का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम है या हस्बैंड का कुछ घर में बहुत प्रायोरिटीज वाली चीज है, बट ड्यू टू वर्क यू आर नॉट देयर? बहुत बार हुआ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम लेट फॉर द बर्थडे पार्टीज, बट ठीक है, यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद इट, बिकॉज यू नो, I think after a certain point of time, your kids also understand. Your kids are also looking up to them. My daughter, my son, they're always happy when I tell them about my work accomplishments. I was telling them today only that bit I'm going for a podcast. They were extremely happy, you know. They were giving me hugs and they were like, "Mama, do this. Talk about us also." You know, so please name them. We want to know about them. So my son is Parthasarthi Sharma, and I have a daughter whom I called Tuna. That's her pet name, but she's Vasavi. And Nice. Brilliant kids. I mean, I love my kids, and they're very good readers. They read a lot, and quite shaitan also. But yeah, I mean, I think I'm living my childhood with them. Yeah, I've been an only child. I'm an only child. So I think this is something I missed. बचपन में बच्चों के साथ खेलना. I also become a kid with them. So this is how I'm doing. मैम, जब हम औरतों की बात करते हैं, हम चाहते हैं वो काम भी करें लेकिन वो घर भी संभाले. ये कभी चेंज होगा? ये समाज में जो हमारे एक धारणा बनी हुई, एक सोच है कि औरत है वो काम करके आएगी लेकिन उसे घर भी संभालना है, लेकिन अगर आदमी आ रहा है तो भाई वो तो काम करके आया ना. इस पे आपको क्या लगता है, ये बदल पाएगा? कब बदल पाएगा? ये बदला है? देखो सोनाली, बदलता तो है बट रहता भी है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. शुरुआत में तो रहता है, हर जगह रहता है, हर रिलेशनशिप में रहता है. मे बी आर एक्सट्रीमली लकी वेर इन आपके घर वाले डे वन से समझ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि धीरे 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 वो भी समझते हैं. डे वन पे कुछ नहीं हो रहा है. डे वन पे आपको अपना वो स्ट्रगल करना ही पड़ना है. इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज, इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड आपको ये स्ट्रगल है. बट व्हेन दे सी दैट नॉट ओनली माई सन हु इज गोइंग आउट एंड वर्किंग and playing a extremely important role in the household, but my daughter-in-law is also going, and she is also participating in this, and she is also an earner, and she is also contributing in the house. They will understand, but वो day one से कभी नहीं हो. ठीक है, you also need to settle down, you know, somewhere in the अपकमिंग जनरेशन होगी वो शायद इस चीज से एग्री नहीं करेंगे. लोग आजकल बहुत वेलकमिंग है विद द फैक्ट. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि चाहते हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ काम करे. करेक्ट. दिस हैज बीन they want their daughter in law, they don't want their daughter in law to sit at home. Right. They are ready to take the responsibility of their grandchildren कि हाँ ठीक है कर लो. But I think your partner also plays a very important role in this, you know. Because the partner is someone who is closest to you in that household. Yeah, correct. You might be a daughter-in-law to the parents, but yeah, वहाँ पे तो आप spouse हो ना. So if your spouse is supporting enough, and if he understands and he can stand up for you, yeah, I think it's not a difficult thing to do, but it takes time. yes, But it takes time. मैम, पर्सनल के अलावा अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा जाए, औरतों के साथ स्पेशली ये होता है
कंटेंट लिखने की बात आएगी, जब लिखना है, कुछ बनाना है, कोई भी लड़की चलेगी, पतली हो, मोटी हो, काली हो, गोरी हो। लेकिन जब प्रेजेंट करने की बात आएगी ऑन स्क्रीन या एनीवेयर, या प्रेजेंट करने की बात आएगी मीटिंग में भी, एनीवेयर, यू नीड वेरी स्लिम, बॉडी फिटेड, सब अच्छी लड़की होनी चाहिए। ये कब बदलेगा? ये ऐसा क्यों है? पर ये डिसाइड बहुत पहले हो गया था। आई थिंक ये नॉर्म्स ना अभी नहीं बने हैं सोनाली, ये नॉर्म्स बहुत पहले के बने हुए हैं। बट आजकल की दुनिया में ना आप देखोगे ना, इन टुडेज वर्ल्ड यू विल फाइंड, चले मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करती हूँ जिनसे मैं बात कर, राइट, I work with a lot of content creators these days. ठीक है, everyone has a different body type, everyone has a different skin type, skin color, hair type, राइट, short, tall, anything. I think the acceptability has gone up by miles. I mean it has increased. ठीक है, मतलब क्योंकि वो ना फ्रैगमेंट्स में हो रही है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हो रही है। ठीक है, if you'll I don't want to say it because it will be it won't be a right thing to say, but I think in North this is something which is happening quite often. right, But when you move to the southern part of the country, or maybe the eastern part of the countries, they're talking about the intellect also. You know, Yeah. the color of your skin is not an important thing to even consider there. I mean, they influencers को देख लो ना आप Right. आजकल, ठीक है, they are influencers. They're short who hand have- as well. They're short and I'm just forgetting the name. Body positive. Yeah, body positive. They're doing, and they're doing phenomenally well. Right. Brands are working with them. They are doing campaigns for what not. I mean, from skincare to lingerie, everything, and then they're super confident. You know. और जैसे मैम जिस इंडस्ट्री से मैं आती हूँ, मीडिया इंडस्ट्री, वो वेलकमिंग नहीं है इस चीज़ के लिए। जब आपको कोर्स करना होता है, व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, तो सब वेलकमिंग है, सारी लड़कियां, सारे लड़के, सब चलेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू जॉब, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। नहीं, एंकर पोजीशन के लिए तो ये अच्छी है, शी इज मोर लुकिंग नाइस, फीचर्स चाहिए, गुड लुक्स चाहिए। तो उन्होंने उनको क्यों करवाया फिर? आपने उस टाइम पे आपको करवानी नहीं चाहिए थी उनको? क्यों एंकर के लिए उन्होंने प्रॉपर कोर्स दिया? यू शुड नॉट टेक देम इन। बिल्कुल, है ना सोनाली, मैं तुमसे 100% अग्री करती हूँ। मतलब देयर इज नथिंग जहाँ पे मैं तुमसे अग्री नहीं करती हूँ, बट हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। आई थिंक वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है सोनाली। यू माइट नॉट सी इट राइट नाउ, बट इफ यू गो टू वेस्ट, things are changing. You will find media anchors of different body types, and you will you go to down south, you go to east, you go to Maharashtra. I mean, I know it's taking time, and it's immensely frustrating, you know. Just because of the basis of how you look. I've seen many people I've seen no, leaving the industry just it's not only you. As a female, as a woman, I have seen it. I might not have experienced it because I have not worked in the media industry, but I have seen it a lot of times that before the interview, only before the candidate is talking about or telling themselves, they're like, right. Same. I have seen that. Yeah. But now the times are changing because, you know. So look at yourself only. Sonali, you have faced this in past. Yeah. But now, once you will get a chance to do something like that, will you do it? No, never. No, you will never do Never. it, right? I will never do it. Yeah. So there's a generational shifts which are happening, but it takes time. It takes time because तुमसे पहले वालों ने तो नहीं सोचा ना ये कि ऐसा भी होना भी चाहिए. Right. ये सोच में डिफरेंस आना ही is the first step. कहीं तो जाने के लिए फर्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा. Right. So this is the first step. Now तुम उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हो जहाँ पे तुम्हारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता. करेक्ट. तुम अच्छे एग्जाम्पल वहाँ पे सेट करोगी, लोग तुमको फॉलो करेंगे, तुम उनको नहीं फॉलो कर रहे हो. राइट. यस, यू आर द चेंज मेकर. थैंक यू मैम. हम डेफिनेटली यू आर द चेंज मेकर. आई मीन आई एम समबडी, मुझे लगता है कि औरतों को जितना ज्यादा एम्पावर कर सकती हैं. यस. ऐसा नहीं है कि मेल्स आर नॉट डूइंग इट, दे आर डूइंग इट, बट व्हेन अ फीमेल इज एम्पावरिंग अनदर फीमेल ना, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पुश, बिकॉज उसको पता है उस जर्नी के बारे में कि क्या क्या व्हाट शी हैज गॉन थ्रू, एंड शी विल मेक श्योर दैट एज ए अनदर फीमेल और एज ए माय सबऑर्डिनेट और माय जूनियर, इसको नहीं उससे जाना चाहिए. राइट. यू नो, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स, एंड आई वांट एवरीवन टू डू दिस, यू नो. बिल्कुल. एम्पावर अदर पीपल. राइट. मैम, जब
वुमेन्स डे की बात होती है, हम एक दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट 364 डेज, उनका क्या स्थिति है? क्योंकि आज भी देखते हैं, हम लोग सुनते हैं, लड़कों अगर कहीं बात कर रहे हैं तो अगर कहीं गाड़ी लड़की चला रही है, अरे बच के रहना, लड़की चला रही है, नॉर्मल भी ये तो मेरे साथ भी बहुत होता है। ये होता है, बट क्यों? अगर मतलब अगर मैचेस की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है, तो अरे इसको तो पता ही नहीं होगा, इसको नहीं पता होगा, या कुछ भी कैलकुलेशंस की बात हो रही है, देश की विदेश की बात हो रही है, इसको क्या पता होगा, लड़की है, इसको क्या पता? ये लड़की हो है भाई, इंटरेस्ट की बात होती है ना। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो लड़की को पता फुटबॉल लड़की नहीं खेलेगी। हाँ, बट ये क्यों? क्योंकि ये तो मापदंड बनाए गए हैं ना सोनाली, ये मापदंड तो बनाए गए हैं ना, ये लोगों की सोच में इतना ज्यादा कोर, मतलब आई मीन इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ देयर कोड मेमोरी। हाँ ठीक है, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर कोर टू देम, कि हाँ मतलब ठीक है, अगर गाड़ी अगर कोई आगे खराब गलत कोई चला रहा है, देखना कोई लड़की होगी। ठीक, बट वो चेंज हो रहा है, मैं बता रही हूँ। और बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि हम वुमेन्स डे एक बार 8 मार्च को हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद हो रहा है। मतलब आप चारों ओर देखोगे, मैंने आपके ऑफिस में देखा अभी, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द ऑफिसेज यू विल सी अ पैंट्री बॉय वर्किंग, बट इन योर ऑफिस देयर इज अ फीमेल हु इज वर्किंग एज गुड एज अ पैंट्री बॉय। इट्स अ चेंज, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे है, बट चेंज तो है ना, शुरुआत तो है ना, शुरुआत हर जगह हो रही है सोनाली। एंड मुझे लगता है कि इवेंचुअली इट विल ग्रो। मुझे लगता है कि आने वाला समय बिलोंग्स टू फीमेल ओनली। आई मीन यू विल सी फीमेल एट वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोजिशंस, यू नो, ruling countries, running companies, and sitting here doing podcast. You know, the time is going to change. I think it has already changed. Started, yeah. You have to just look around and be a part of that. ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो appreciate them, appreciate another women. I think ये शुरुआत ही वहाँ से होगी when one woman is appreciating another one. Right, बिल्कुल जरूरी है। Coming back to you, ma'am, you are a marathon lover. I'm a marathon runner. Yeah. मैराथन के लिए, ये रनिंग के लिए प्यार कैसे जगा? Okay, so I was in my initial years I was not fit. So when I say fit, so मेरे लिए there is nothing like somebody who is a fat or slim. No, I mean what I mean by being fit is I'm able to run with my kids. I play cricket with my son. I run with my daughter. I swim with my daughter. So when they were like babies, I used to think that whether I would be able to do it or not. I mean, I have faced this obesity a lot in the earlier days of my life, but joined a lot of gyms, burned a lot of money, बहुत सारे पैसे खराब किए. But then 4-5 years back, I just started doing something on regular basis. You know, so when you started? 4 years back. It's 4 years back. Okay. So 4 years back, I started doing it, and I just did one thing. I was consistent every day. I was showing up every day, whether it was morning or evening, whenever I was getting time. 6 बजे हो, 7 बजे हो, मेरा कोई गोल नहीं था उस टाइम. मुझे बस ये था कि मुझे consistent होना है. After 1 year of being consistent, I started enjoying it. I started enjoying it, and today if I'm not doing my workout, I'm frustrated, I'm not happy. So this is it has a lot to do with my mental health now. For that matter, running is like meditation for me. So when I'm running, it feels like I'm meditating. So you know, you just have to show up every day. Right. Show up every day, be consistent. Routine is absolutely boring. The most boring thing is routine. Look at Virat Kohli. Right. 4-5 घंटे वो एक्सरसाइज कर रहा है. He is not able to eat his favorite छोला भटूरा. वही कर रहा है रोज. But that routine has made him what he is today. So लोगों को सिर्फ सामने वाला वो विराट कोहली दिख रहा होगा. Nobody has seen the routine. So just show up every day, be consistent, follow a routine. I think that works really good. हम जो अपकमिंग मार्केटर्स हैं, जो करना चाहते हैं, मार्केटिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Understand your customer. Read what is happening. Understand if customer is moving from purchasing a product from Amazon to Blinkit, why are they doing it? And if they're moving from that place to another platform, why are they doing it? And are you there?
are you there? I mean, the attention span has gone down to, I guess, 8 seconds. I think the last I read it was the attention span of a millennial or Gen Z is 8 to 10 seconds. Can you capture your audience interest in those 8 seconds? Yeah. Think. Right. There's nothing like a wrong idea or a bad idea or a boring idea. Never hold yourself कि हाँ ये idea है मुझे बहुत बुरा लगेगा तो मैं बोल दूँगा. Always say that idea. You never know what's going to work. Yeah, so that's something. एक चीज मैं मैम आपके बारे में बताऊं कि जो आपसे लोग सीख सकते हैं. You are a very good learner. आपने मतलब हर फील्ड में जाके स्क्रैच से स्टार्ट किया एंड यू लर्नड. हाँ मैं बोर तो हो जाती हूँ. मतलब जब मेरे बच्चे 2-3 साल के थे तो मुझे लग रहा था मैं बहुत यूजलेस हो गई हूँ. So मैंने मैंडरिन सीख ली. I learned Mandarin. I mean, Mandarin is one of the most difficult language to learn. But this is something. I mean, I think I'm really thankful for God for this thing. But yeah, I really like learning, and I think it's never too late to start learning it. You should always start. We should always keep on learning new things. Asking anyone. I mean, don't shy away from asking your junior कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. No, you are doing it for yourself. Yeah. Once you understand that you are doing it for yourself, I think. Yeah. Thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you so much, Sonali. It was lovely talking to you. Same here, ma'am. Thank you. Thank you.